Wildlife protection is crucial for maintaining the delicate balance of our planet's ecosystems. When one species disappears, it can set off a chain reaction, affecting everything from food sources to the health of the soil. The main goal is to prevent the direct harm of killing of animals. The Constitution of India has recognized the protection and preservation of ecology and environment as a facet of right to life, which is an important fundamental right. As such, ecology and environment are not objects of ownership, but are nature's gifts intended to be preserved and protected. Nagaland is one of the biodiversity hotspots. So biodiversity hotspot koa to yate birds laga thakile bi, mammals laga thakile bi, gach laga thakile bi, ki thakile bi ito beshi ase. Whole world te biodiversity hotspot koe amakan. Kon jaga te biodiversity beshi ase. To Nagaland to Indo-Burma biodiversity hotspot laga part ase. Ito karani ek hisab para amakan beshi lucky ase that amakan thaka jaga te ito किस्म ito birds, animals, ki, gach khan bhi ito beshi pai. Nature has really blessed us in terms of that. Hole bhi iman nature para amakhan ke gift kura do amakhan olap kori kina filai nisina jaise. Chidiya khan bhi kiman hole bhi manu khan para hunting para mari diye aro mammals bhi iniga se aro forest laga destruction bhi beshi amakhan para kori diye. It's never too late to make a new beginning. Ito beginning laga to amakhan science to dikhi ase. Slowly things change. But ito change kori bole first we have to change our perception. First we have to change our outlook. And first we have to start appreciating the beauty of wildlife. And as human being, it's our moral responsibility to coexist, to live together and to protect the wildlife also. Kono ba to ito wildlife thaka to ki labh ase ito bhi ekta question hoda hai manukhan pathai thake. To ito laga reply to different level te thakibo pare. Ekta koa do amakhan spiritual and aesthetic level ko hai. Ito koa do amakhan human being thaka to itu responsibility ase. Ito ki dusra thaki ase wildlife thakile bi ki thakile bi ito khan ke bi amakhan thaki bole dibo koi kina. As human beings, it is our moral responsibility. Wale bi khali morality para to na hoy. Ito laga direct indirect labh aru ki ase. To amakhan direct labh laga kotha kobo. Ito wildlife kiba kibi thaka to kutte thake takan to jungle te thake. Jungle para khabole kiba kibi bhi pae, environment bhi regulate kure, pani bhi pae, hawa pani bhi bhal kure. To wildlife thaka karan to jungle bhi thake aru jungle thaka la ki labh ase itu do ase. Itu para bhi amakhan aru tangible mane direct ki benefit ase koa koile. Tourism potential thaka karani ki thaka karani. Itu to amakhan एक दिन दे दो ना होबो अमाखान इतो मानते रखी के ना एरिया तो ओलप थकी के ना डेवलप करिबो लागिबो डेवलप करा टाइम दे इतो इनिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म लगा थाकिले भी होम स्टे लगा थाकिले भी नेचर गाइड्स बर्डिंग गाइड्स की थका इतो खान लगा भी बेनिफिट स्लोली स्टार्ट होबो और सिचुएशन तो चेंज हो जाबो वाइल्ड लाइफ ते उसते थका भी कितिया बातो इतो अमाखान एकता वर्ड यूज करे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड तो की आसे कोबो कोयले अपनी दिल्ली ते थाकी आसे ताते गाड़ी बेसी आसे तो पोल्यूशन तो थाकिबो इतो तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड आसे आमी जति जंगल उसाते थाकी आसे तो जंगल परा किबा किबी इंसेक्ट किबा किबी आहिबो तो कारणी वाइल्ड लाइफ परा भी कित्या भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड निशिना भी हो जाए स्पेशली अमाखान वोखा डिस्ट्रिक्ट ते इतो एलिफेंट्स लगा प्रॉब्लम भी बेसी उलाय आसे ओले भी ताते अमाखान as human beings amakhan smart ase amakhan we can think we can try to solve the problem kini ga solve koribo itu milai gena itu laga bi upay bi
কৰিব পাৰে মিলাই কেনা বহি কেনা কথা মিলাই কেনা আৰু গভৰ্নমেণ্ট পৰা বি মদদ লৈ কেনা এইটো হিচাপ পৰা আমাখান এইটো কি প্ৰব্লেম থাকিলে বি অকুপেশ্যনেল হেজাৰ্ডছ থাকিলে বি এইটো লগা এড্ৰেছ বি 100% না থাকিলে বি টু এ লাৰ্জ এক্সটেণ্ট কৰিব পাৰে One of the most effective strategies for conservation is the creation of protected areas. These are designated zones where wildlife and their habitats are safeguarded from human encroachment and exploitation. There are several types of protected areas, each with a specific purpose. 15-20 years back तो की साइले भी मानुखान मारी के ना खाबोले कारण भी ना होले दूसरा किबा कारण भी इतो तो एकदम कॉमन प्रैक्टिस था किसे होले भी आजिकली तो इनिका ना है कोनबा बस्ती खान तो कम्युनिटी रिजर्व खान भी डिक्लेयर करी थी शे इतो नागालैंड ते इत्या आमाखान बस्ती मानुखान पर डिक्लेयर करा तो 160 निशिना कम्युनिटी रिजर्व हो जाए शे और इतो अंडर ते आमाखान 160 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो इतो प्रोटेक्शन अंडर ते आनी थी शे ताते तो बस्ती मानुखानी ताइखान निजेर प्रोटेक्शन दिए और इतो एरिया तो ताते हंटिंग भी बैन करी के ना से किबा फिशिंग भी बैन करी के ना से इतो कारणी ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ नागालैंड तो इतो कम्युनिटीज अंडर ते हाथो ताते प्रोटेक्शन आही आसे और मानुखान आमाखान इतो रेस्क्यू कारण भी बेसी कॉल्स पाए ताते किबा इतो एनिमल एकता इंजर्ड आसे ते इतो आई के ना साइलो भी लई जाबी ना होले ताते इतो कोनबा हंटर खान बिराय आसे कोई के ना इतो खान खबर भी आमाखान बेसी पाए तो कबो कोइले तो पहला परा सिचुएशन तो बेसी चेंज होइसे होले भी इत्या भी चेंज करिबले आरो भी स्कोप बेसी आसे नागालैंड तो दूसरा स्टेट्स नेशना तो ना होय दे दूसरा जगह दे तो फॉरेस्ट तो बेसी भाग तो गवर्नमेंट लगा आसे आरो नेचर ओनरशिप तो छोटो मोटो खानी आसे होले भी नागालैंड तो एकदम अपोजिट नेशना आसे याते तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट तो छोटो आसे और बेसी भाग तो प्राइवेट ओनरशिप आसे और ये तो प्राइवेट ओनरशिप थाका कारणी ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ ये तो खान लगा रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसी डांगोर आसे ताते की पाए तो वाइल्ड लाइफ थाकिले भी इंसेक्ट थाकिले भी बर्ड्स थाकिले भी गाछ खान थाकिले भी ये तो लगा प्रोटेक्शन लगा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा आसे होले भी नेचर थाका कारणी अपनी खान लगा भी ताते रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसी आसे When it comes to wildlife management at the national level, आमाखान national level ते decide करी छे तो 5% land लगा area तो different ecosystem लगा आमाखान preserve करी बोई तो protected area network कोई माने तो area तो wildlife फरू biodiversity कारणी protect करी बो कोई के ना ओले भी नागालैंड ते forest पिछी private थका कारणी नागालैंड ते तो 5% तो हुआ नहीं आमाखान तो खाली 1.5% नीचे नहीं जैसे ताते इम्पॉर्टेंट थका खान तो इंतांकी नेशनल पार्क पेरिन डिस्ट्रिक्ट थे फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किफिरी डिस्ट्रिक्ट थे और सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोन डिस्ट्रिक्ट थे ये तो तीन ही मेन है तो इंतांकी तो मोर देन 200 स्क्वायर किलोमीटर सिंगफान तो 23 स्क्वायर किलोमीटर और फकीम तो 6.5 स्क्वायर किलोमीटर निशिना नेशनल लेवल ते कोआ तो आमा खान डिफरेंट इकोसिस्टम प्रिजर्व करिब লাগিব কব কইলে ফুটহিলতে একটা থাকিব লাগে মিডলতে একটা থাকিব লাগে একদম हायर एलिवेशन ते एकता थाकी लगे टॉप ते एकता थाकी बोला किले माने सब जगह रिप्रेजेंटेशन थोड़ अलप करी के ना रिप्रेजेंटेटिव इनिगा थाकी बोला प्रोटेक्टेड एरियाज खान तो किले माने फुटिल ते की स्पीशीज पाए तो टॉप ते ना पाबो माजर ते की पाए तो फुटिल ते ना पाबो सो इतो कारणी स्टेट खान तो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा टाइम ते क्राइटेरिया इनिगा लय सब इकोसिस्टम लगा रिप्रेजेंटेटिव अलप करी के ना इनिगा करिबो आमाखान लगा फाकिम तो ऑलमोस्ट 2600 मीटर ते आसे तो इतो कारणी हाई अल्टीट्यूड लगा एरिया आसे ताते हाई अल्टीट्यूड ते की पाए लाइक ब्लाइथ स्ट्रैगोपैन और सराओ और क्लाउडेड लेपर्ड्स और वाइल्ड डॉग सांबर्स इतो खान आसे और इंतांकी और सिंगफान तो फुटहिल्स ते आसे फुटहिल्स ते था खान लाइक एलिफेंट्स एंड लेपर्ड वाइल्ड डॉग्स सांबर बार्किंग डियर इतो खान आसे प्रोटेक्टेड एरिया ते तो आमाखान वेजिटेशन तो नेचुरल की आसे ताते इतो ही रखी बोले आमाखान ताते बेसी डिस्टर्ब ना करे नेचर ला परा इतो लगा काम इतो सेल्फ रिजेनरेट करि बोले दिए आमाखान बेसी किबा डिजीज किबा किबि থাকিলে না ताते बेसी इंटरवीन ना करे की निका जाय से नेचुरली इनिका जबले दिए किले माने नेचर परा इतो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर परा ताते की ভাল আছে इतो ही उलाई के ना रखी छे इतो कारणी
We do not generally do any intensive management in terms of trees or shrubs or herbs. তাতে কি naturally grow কৰে এইটোকেই আহিবলৈ দিয়ে যদি কোনোবাই তো বেছি ওলাই যাইছে কিবা কিবি হৈ যাইছে then we can intervene. Mostly we don't. Things have changed a lot, and the perception will also change slowly. তো কোনোবা তো এতিয়া বি যাই কিনা কিবা করে থাকে হলে বি আমাখান বি বেছি alert আছে আমাখান ওচৰতে থকা বাস্তিকানি তুখান লগতে আমাখান কোঅপাৰেট কৰে আৰু তাইখান বি কোঅপাৰেট কৰে লাষ্ট ইয়াৰ আমাখান ইনটাংকি around the 18 basti থকা ইতুখান লগতে MOU বি একটা যাইছে তাইখান লগতে আমাখান eyes and ear আমাখান লাগা নিচিনা ইটো থাকিব আমাখান বি তাইখান লাগা কি পাৰিব ইটো লাগা মতলব কৰিব তো তাই তো জয়েন্ট ন্যাচারাল হেৰিটেজ আছে তাইখান লাগা বি ডিপাৰ্টমেন্ট লাগা বি কান্ট্ৰি লাগা বি তো ইটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ তো সব civil society organizations khans and NGO khan to all up ahi kina amakhan logote madad di ase aru amakhan bi parata cooperate kuri kina to jay ase to garani milai kina even if the department cannot be there all the time these people around if they are willing if they cooperate I think that will help us a lot. The legal framework for wildlife protection in Nagaland is primarily the Wildlife Protection Act 1972, which the state adopted in 1981. This law prohibits the hunting of most wild animals and provides strict penalties for offenders. The act also empowers the Forest Department to take action against illegal wildlife activities. Ito bhi ekta Nagaland misconception ase koi gina ito hunting to koribo pare to moi to ekdam clear kuri ase the Wildlife Protection Act 1972 ito Nagaland te extend kuri dishe de Nagaland Assembly para adopt kurise aru ito pache de hunting to any kind hunting birds thakile mammals thakile ki thakile bi ito sab illegal ase except few species which are very abundant like rats and crows and those other than that every bird animal has been extended some protection under the act. The 1976 amendment of the Constitution subjects forest and protection of wildlife in the concurrent list under the 7th Schedule, Article 246. These animals brought the central and the state government to enact laws on forest and wildlife. Furthermore, protection of wildlife and forests included under the directive principles of state policy mandates the government, which includes both central and state governments, shall protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife of the country. As human beings, we have our moral, cultural responsibility. Ito amakhan laga natural heritage ase. Amakhan laga constitution te bhi directive principle te bhi hali gaya ase. Ito laga protection kori bole do. Aro apni khan amakhan logote milai kena jaile sab Nagaland te ito ami ko anishina bishi amakhan already change kuri dishe aru bhi change kori bole scope ase to ito time te amakhan resolve ekta loi kena wildlife protection karani ama department ke cooperation de bole information ki baat thakile ito bhi dibi DFO khan ki laga ke logote share koribo pare. I would like to appeal all of you to extend your helping hands towards conservation of life and let Nagaland, which is known for many good reasons, including many festivals and the rich culture, let it also be known as a hotspot for wildlife tourism. Ultimately, the future of wildlife rests on our shoulders. By supporting protected areas and upholding the laws that protect them, we can ensure that the wild places of our planet continue to thrive, not just as a habitat for animals, but as a source of wonder and inspiration for us all. Please like and subscribe to our channel and hit the notification bell for the latest contents. Also, follow us on all our social media handles.